Hello everyone, welcome back to your favorite channel Studlins, which adds excellence to your learning. In our previous lecture, we have seen about the encapsulation and also about the private and protected variables, which helps us in making our class data much more secure. In this lecture, we will see about polymorphism in Python. Polymorphism means one thing having different forms. Like, to take a real life example, a man who is a husband, then at the same time he's an employee, and at the particular time he's a father. In similar ways, he performs different other works in different situations according to the need. In the same manner, we have an area function as mentioned on the screen. Here we have used two parameters in an area function and the other parameter in the second area function. But the name of the function is same, named as area. Remember, they return different values according to the parameter being passed. At the same time, we have polymorphism in class. As we can see on the screen, we have defined two classes, one for the dog and the second one is for the cat. We have the same function in both the classes, but the output depends on the fact with which the object this function is being called. Then we have the concept of method overriding. As we can see on the screen, that we have a parent class car and then we have two child classes, namely Alto and BMW. So, both the classes inherit the type function of the parent class. But here, we have re-implemented the type function according to the Alto and the BMW class. So, this re-implementation of method is called as method overriding. Now let's see how we can apply polymorphism in our Python editor. Now let's practically apply whatever we have learned in this part in our live coding session. So let's move to the live coding session. So welcome back students again to this live coding window. तो अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट UPS के सीख लिए हैं. वन इज इनहेरिटेंस, the another one is encapsulation and also we have learned about the class and object. So जो हमारा ये last lecture है इस मॉड्यूल का, that is polymorphism. Polymorphism is also one of the important concept of object oriented programming language. So जैसा कि हमने अपने एनिमेशन में देखा था that what exactly polymorphism means. The word polymorphism means having many forms, means the name of the function can be same but the behavior of the function depends upon the number of arguments and the type of arguments which we are passing in it. हमने वहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखा था that जैसे एक आदमी कैसे that a man at the same time is an husband, at the same time he is a father and at the same time he is an employee. वैसे ही हमारा जो फंक्शन होता है, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम बट द बिहेवियर एंड द आउटपुट ऑफ द फंक्शन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ मच आर्गुमेंट और विच टाइप ऑफ आर्गुमेंट एक्चुअली वी आर पासिंग. सो लेट मी गिव यू अ एग्जांपल बाय मेकिंग अ फंक्शन एक्चुअली. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो ये सारे जो कोड आप देख रहे हैं ये हमारे पिछले लेक्चर्स के कोड हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू टू once revise those and then again come back to this lecture. So I have defined a function area. Inside that I have passed two variables, two arguments b and c, and I have returned the value b into c. Now I have called this function print the area of the rectangle is, I will write here area. Inside that I will pass two variable 2, 3.
So as I will press here enter, I can see that the area of the rectangle is 6. So actually how it has been calculated, तो जैसे कि हमने अपने फंक्शन के चैप्टर में देखा था कि ये जो दो आर्गुमेंट्स हैं 2, 3, it is directly getting copied here. B is assigning the value 2 and the C is assigning the value 3, and after calculating the result of 3 into 2 6, we are getting the result with the help of this return keyword. अब हमने फिर से सेम फंक्शन दोबारा डिफाइन किया, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने 2 की जगह एक आर्गुमेंट पास की और सेम आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई किया. Now what I will be doing, this time I am calculating the area of the square because the area of the square is side square. So यहाँ पे हमने 2 और 3 की जगह केवल हमने 2 पास किया. So now what I will be getting the output, I am getting the output to be 4. तो हम यहाँ पे एक्चुअली देख क्या रहे हैं कि हमारे फंक्शन का नाम तो सेम है, but actually the overall behavior of these two functions depends on the fact that how much number of argument actually we are passing. So here we are passing 2 arguments and here we are passing 1 argument, so accordingly we are going to get the answer. So now what is polymorphism in class? So let me define a class puppy. Inside that I will define 2 function intro and after that in intro I will be writing print the name of puppy is Tommy. Now I will press here enter. Now I will define the another function that is about the color. So I will write here color and then I will write here that the color of the puppy is black. So now I have defined this class. Now I will be defining one more class with the help of Kitty, that is for the cat. So I will change the name as I am copy and pasting the code, but I will suggest you all not to do the same because it will hamper your like coding skills. So I will request you to please code along with me. So the name of the cat is Kitty. The name of the cat is Kitty and the color of cat is black. So now these two objects, these two classes are created. Now I will be creating a class. I will be creating an object Tommy of the class puppy. So now I have created this. Now I will create a object of Kitty of the class. Now I will create the Kitty 1 of the class Kitty. Now my both object is created. Now I will call both the function Tommy dot intro, Tommy dot color. Then I will call here Kitty1 dot intro, and next I will call Kitty1 dot color. So actually what I am going to show here, मेरा यहाँ मेन पर्पस ये था कि हमने इंट्रो फंक्शन यहाँ भी डिफाइन किया, इंट्रो फंक्शन यहाँ भी डिफाइन किया, हमने कलर फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है पपी क्लास में, और हमने किटी क्लास में भी कलर फंक्शन डिफाइन कर रखा है. लेकिन एक्चुअली जो हमें यहाँ आउटपुट मिल रहा है वो हमें आउटपुट इस डिपेंडेंसी में मिल रहा है कि एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये किस ऑब्जेक्ट के साथ एक्चुअली एसोसिएटेड है. जैसे ये इंट्रो फंक्शन अभी टॉमी के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें आउटपुट में मिल रहा है द नेम ऑफ द पपी इज टॉमी, बट आई हैव आल्सो the same function for the kitty class also. So why I am not getting that? Because I am not calling that function with the
ऑब्जेक्ट ऑफ किटी क्लास। सो जैसे ही हमने किटी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इस इंटर फंक्शन को कॉल किया, हम यहाँ देखा हमने कि द नेम ऑफ द कैट इज किटी एंड द कलर ऑफ द कैट इज ब्लैक। सो एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आपको इन दो एग्जाम्पल्स में से समझ में आ गया होगा। इवन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म इन इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग का। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट क्लास के जो मेंबर फंक्शंस और जो डेटा वेरिएबल जो बेस क्लास इनहेरिट करते हैं, लाइक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वी नीड टू री इम्प्लीमेंट दैट। सो एक्चुअली व्हाट आई मीन फ्रॉम दैट, सो लेट मी क्रिएट अ क्लास कार। Inside that I will define a function intro, and inside that I'll be writing print. Then I will write here there are. Then after that, inside that I'll write there are many types of car. Then I'll define another function def type, and inside that I will pass again the self word as the reference, and I'll write here print I can write here some are of diesel engine and some are of the petrol engine. So I'll close this. So now my this class car parent class is ready. Now I'll define a class alto. Inside that I'll pass the car as the parent class to inherit. Now I'll press here enter, and I will use the type function, and inside type I'll pass the self, and then I'll print here print alto is a diesel engine car. I'll press here enter. Now again I'll copy this class, and I'll create I'll copy this class, Control C, and I'll paste this class, and this time I'll pass it, I'll make a new class of BMW. So I'll write here BMW is a petrol engine car. Now I'll press here enter. Now I'll create an object of alto class, alto 1 equal to alto, and BMW 1 equal to BMW. Now I'll class BMW 1 dot type alto 1 dot type. तो एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो टाइप फंक्शन था वो ऑलरेडी इनहेरिट हो रहा था हमारे इन दो क्लास में, लेकिन हमने उस टाइप फंक्शन को दोबारा री इम्प्लीमेंट किया अपने चाइल्ड क्लास में, और हमने ये जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि सम आर ऑफ डीजल इंजन एंड सम आर ऑफ पेट्रोल इंजन। सो ये टाइप फंक्शन अगर डायरेक्टली अगर यहाँ पे कॉल होता तो दोनों के लिए सेम ये आउटपुट आता, लेकिन हम यहाँ पे चाहते थे ये बताना कि ऑल्टो जो है वो एक डीजल इंजन कार है और BMW है वो एक पेट्रोल इंजन कार है। तो हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन को दोबारा री इम्प्लीमेंट किया, उसे रीडिफाइन किया, और फिर हमने अपने आउटपुट में देखा। तो इसी का मतलब होता है मेथड ओवरराइडिंग, कि हमने इस फंक्शन की री इम्प्लीमेंटेशन की, एंड वी हैव मॉडिफाइड दिस फंक्शन इन आवर चाइल्ड क्लास अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पॉलीमॉर्फिज्म लेक्चर। सो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि एक्चुअली व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, दैट अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम but the behavior depends on the fact that how much argument is being passed. Then we have seen that actually what polymorphism means in class, and then we have seen that how polymorphism and the method overriding is being achieved in the case of inheritance. So I request you all to again see all the lectures of this module
अगेन कि आपके जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग दैट actually how oops concepts are being implemented in our code. So we have learned about the class and objects, we have learned about the inheritance, we have learned about the encapsulation, then now we have seen about the polymorphism. So this was all for this module. I hope you have enjoyed it. That's all. Thank you. Congratulations on completing this concept. We will get back to you with some more interesting concepts in the upcoming video. Till then, take care and bye-bye.